डोंट मिस दिस वीडियो बिकॉज आज मैंने बात किया है ओवर थिंकिंग के बारे में जो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था बहुत पहले से. Hmm. Nice. So this is our hotel. As you can see, view is like super crazy, and this is our room. It is a bit messy, but Because you're making. Why are you doing that? if you see, it's crazy, right? Mm-hmm. So this is our hotel. This is messy, but let's keep it there. You want to go outside? Yeah, let's go. Let's go outside. Yep. Come here. You can also. This is our villa, and this is all the view. Hmm. So yeah, that's Hot. all about it. Let's enjoy. So sometime I'm super happy and sometime I'm fucked up. There are so many things in this world जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं लेकिन हम लोग किस बारे में सोच रहे हैं? Some fucking shit. एंग्शियस सा लगता है, ऐसा दिल हैवी फील होने लगता है, ऐसा लगता है सांस नहीं लिया जा रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग थॉट्स दिमाग में आते हैं. क्यों क्यों होता है ऐसा? हाँ, कभी भी समझो गर्लफ्रेंड के साथ फाइट हो गया एंड यू आर रीप्लेइंग दैट आर्ग्यूमेंट इन योर ब्रेन ओवर एंड ओवर, एनालाइजिंग एवरी वन, किसकी गलती थी, एवरी जेस्चर. or maybe you have a friend who drinks a lot and you are scared of being alone. So हम लोग वो लोग के अराउंड ही रहते हैं even though it is affecting our health, our well-being. I want to quit smoking but I cannot because I am scared of being lonely. This fucking thoughts यार, it can be anything. About is overthinking. क्यों होता है यार ये, मतलब रीजन क्या है इसके होने का? ओह मैन, क्योंकि हम लोग इस छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना कि अब माइंड कैन नॉट टेक एनी वैकेंसी, राइट? हम लोग का माइंड खाली नहीं रह सकता. अगर रह सकते हैं आपका माइंड खाली तो आप बुद्धा या कोई परमात्मा या मॉन्क हो, बट in this generation it is not possible to make sure that our mind is not thinking of anything. Every minute every second ये कुछ ना कुछ सोच रहा है और इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चले जा रहा है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इसको हम लोग शांत कर सकें. सो वॉट वी कैन डू इज फिल इट विद द थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे उन चीज़ों से व्यस्त रखें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ पे है. हम सभी के ये बेसिक नीड्स है, पैसा, गाड़ी, कपड़े, और कोई भी ये फील नहीं करता है कि एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट इन देयर लाइफ. कुछ ना कुछ मिसिंग है सबके लाइफ में, ऐसा सबको लगता है यार. आई डोंट नो इफ देयर इज समवन हु थिंक्स एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, दे आर ऑलवेज एट द टॉप, दे आर ऑलवेज फीलिंग हैप्पी. आई डोंट नो इफ समवन फील्स दैट वे, बट अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में अगर इतना सोचने लगे कि man, this is not going perfect, this is not going perfect, man, this is not going perfect, I'm not happy every second. Will he ever be happy? Life is top down, top down, top down, not always top. मैंने ब्रेक लिया अपने जॉब से, मेरी कॉलेज से छुट्टी लिया आपने, या कोई भी हो आप किसी भी सिचुएशन में हो आपने छुट्टी लिया ये सोच के कि मैं अब कुछ सीखूंगा, मैं कुछ अब करूंगा. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर पे हो, आप टाइम पास कर रहे हो इनसिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और 10 दिन कंप्लीट हो गया. किसी ने आपसे पूछा क्या किया 10 दिन? नथिंग इन पर्टिकुलर. लेकिन किया आपने बहुत कुछ, लेकिन कुछ वर्थवाइल नहीं किया. नथिंग इन पर्टिकुलर. गेट सम पर्पस यार, हैव सम गुड गोल्स. We think so many things, we do so many stuff, but when I ask you what did you do, nothing in particular. I don't want to be someone who does nothing in particular with his life, right? That's why I'm experimenting this thing. ये क्यों कर रहा हूँ मैं vlogging? जॉब कर रहा हूँ, जॉब के बीच में आ रहा है, लेकिन कर रहा हूँ क्योंकि I always wanted to do this thing. I always wanted to experiment with it, and right now I'm doing it. It took time, to come in front of camera. I used to make videos, but I always used to hide my face. But right now, I don't care, right? What other people think, I don't give a shit. I'm making this for myself. Yeah, and that's all. That's all, yeah. That's all about overthinking, because we should know that it's a problem. If you think about every little thing a lot, if you give too much attention to every little thoughts you have, it's overthinking. I used to have this problem. It fucks our mind, it fucks our heart, it fucks our entire body, our lifestyle. I know it, man, but with time it get healed. Try to control your brain, try to don't think about every little thing, and try to have some purpose in life, some good goals, so that
You can only focus on those stuff. Eventually you will realize that those things never mattered, you know. Do this kind of stuff, yeah. Identify your priorities, create daily routine, focus, limit distraction, engage in productive activities, reflect and adjust. This is what I'm going to do. One last thing, whenever you try to find some purpose of life, don't try to go after some passion, you know, that ये मेरा पैशन नहीं है इसीलिए मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ तो मैं इसमें मीडियोकर ही रहूँगा. That's not how it works, brother. You don't know when you will find your passion. At the age of 25, 35, 45, you don't know that. You have to at least try one thing for 10,000 hours. Then you can decide that I want to proceed with it or not. But before that, don't go with that kind of passion that ये मेरा passion नहीं है, that's why I will not do it, man. No. Choose something, do it for 10,000 hours, then decide that if it is your passion, if it is your purpose or not. Just don't decide before doing that, okay? Basically 10,000 घंटे वो काम करने के बाद you will have like this great work ethics, which is most important in any field you go. कोई भी field choose कर लो यार, work ethics is important. What is work ethics? Your ability to complete one task. Right now that's my problem. Whenever I try to complete something, मैं उसको complete नहीं कर पा रहा हूँ यार. That's my problem right now. That's I want to overcome. So ये blogging plus job plus development plus खुद के SaaS product बनाना, there are so many things align and मेरा backlog भरते जा रहा है और मैं what should I say, but I want to learn this, yaar. I want to learn. I always wanted to do this thing and it took me time to come in front of camera and start talking about all this thing, you know. It took time. It took time for me to left my previous job which was going good and I did everything and I will do more. I want to improve myself and I want you guys to also get improved with me. Thank you for watching this video. Have a great life, guys.